हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल आर वेल। सब लोग अच्छे होंगे। आज हम असाइनमेंट 1 सॉल्व करेंगे, लेजर क्रिएशन विथ ग्रुप्स इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर हम लेजर ग्रुप क्रिएशन करेंगे विथ ग्रुप्स। लेजर क्रिएट करेंगे विथ ग्रुप्स करेंगे। यस, टैली प्राइम के अंदर we can maintain, there are two methods to maintain the accounts. One is account only and another one is accounts with inventory, as we have already studied it. पहले टैली ओपन करेंगे। किधर है टैली हमारा टैली किधर है? टैली प्राइम टैली इधर है। इधर डबल क्लिक करेंगे, ओपन होता है। बाद में असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। इधर लेफ्ट साइड में लेजर्स है, राइट साइड में ग्रुप्स है। तो पहला लेजर कौन सा है? एक कैपिटल है। ये कौन सा ग्रुप के अंदर डालने का? कैपिटल अकाउंट्स पे। ड्राइंग्स अकाउंट्स है। ड्राइंग अकाउंट किस ग्रुप के अंदर डालने का? कैपिटल अकाउंट के। परचेज अकाउंट, purchases should be in their purchase accounts. Sales accounts. Return outwards means जो मैं पहले रिटर्न आउटवर्ड मीन्स जो डिफेक्टिव हम परचेज किए रहते हैं, अगर कुछ वो हमको कुछ प्रॉब्लम आता है गुड्स के अंदर, हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स जो हम माल किसी को बेचते हैं, वो अगर कुछ डिफेक्टिव आता है तो कस्टमर हमको रिटर्न करता है, वो दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड मीन्स इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैटेज मीन्स दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. Plant and machinery means it is comes under fixed asset. Furniture comes under fixed asset. Investment comes under investments. Land and building, fixed assets. Import duty, indirect expense. Dock dues, indirect expenses. हम ये सभी क्रिएट करेंगे आज। पहले हम नया कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी, go to company, then create, click on create, then give any name, ABC assignment ऐसा ही डालेंगे। assignment 1. Press escape, press S, then go to, you will get the gateway of tally. After creating the company, you will get the window of gateway of tally. Here it is. Then you will get here create option. Then we will get this window, accounting masters. First we will go to ledger and press enter. Here, which is the first ledger? Capital. It comes under capital accounts only. Here select capital account, then go on, press enter. Press yes. Then second one, drawing window. Drawings, that is also comes under capital account. Just you go on pressing enter. Then purchases,
comes under purchase account. Here where it is, this is purchase accounts. Select and press enter. Then go on, press enter. Here you can select goods. Now it is not necessary. Press yes. Then sales. Sales comes under sales accounts. If you type just sales, then it will come list of groups selected. Then return outwards. This comes under purchase accounts. Then return inwards. This comes under sales accounts. Then carriage inwards. That comes under indirect expenses. Then carriage outwards. That is also comes under indirect expenses. Then cartage. That is also comes under indirect expenses. So go on pressing enter. It will create. Then plant and machinery. It comes under which group? Here it is fixed asset. Type F, it will come fixed asset. Then investments comes under investment. Then land and building comes under fixed asset. Then import duty comes under indirect expenses. Then dock dues. This comes under also indirect expenses. Press escape. We are created all 15 ledgers with groups. Okay. Then we will press escape to come out of this window. Press yes. Then again press yes. If you wanted to alter a group, then go to alter and select ledger. If you which one you wanted to alter, then select that ledger. These are all the 15 groups that we have created. Then press enter. If you wanted to create here, if you wanted to make any changes, you can capital Raj. Then go on pressing enter. It will save in that name. ये correction हो जाएगा ना. Likewise, you can alter the name of a ledger. These are all the groups, ledgers that we have created. नेक्स्ट क्लास पे हम लेजर कैसा लेजर क्रिएट करेंगे वो और भी सीखेंगे. बाद में हम वैसे ही नेक्स्ट क्लास पे सीखते जाएंगे. कीप वाचिंग आवर वीडियोस. थैंक यू वन एंड ऑल. हैव ए गुड डे. ये टैली प्राइम को के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, इसलिए ये जो सीखना है वो मत भूलिएगा. थैंक यू वन एंड ऑल.